So hi guys, welcome to Karostartup. We are again with the third episode with Miss Priya. So she is the founder of Starbuzz AI. So that is an influencer marketing platform. So we'll be talking about her journey and a lot of other stuff. So let's start from her introduction. Ma'am, please if you could introduce yourself. Hi, Aman. Thanks for inviting me for your show. My name is Krishna Priya. I'm the founder of Starbuzz AI. At Starbuzz AI, we have built a software that automates the entire influencer marketing through all the different stages, right from finding out the relevant influencers based on different metrics like their engagement rate, fake followers percentage, the audience demographics, gender, and all these different metrics, to connecting with the influencers and monitoring the entire campaign. The major problem these campaign managers have when they are launching an influencer marketing campaign is, they have to do a multiple levels of follow-ups and Right. back and forth conversations with the influencers as to if they've posted the content, if they've used the hashtag, and, Hmm. to send them, asking them to share the screenshot of the insights. This becomes hectic for both the influencer and the brands, to keep a track on. So that is also one more part where we are automating it, where, the brand can just add the influencers to the campaign and the software will automatically keep a track on it and gives the entire metrics of how each influencer is performing and how the overall campaign has performed. Hmm. So yeah, that's it. That's what we are building. So properly, it's basically into tech side, right? So you are just Yeah. trying to automate the whole process. So Yep. usually I've seen ki whatever you are building, or let's suppose someone start a startup in particular domain, right? So they have some personal experience, right? So why Starbuzz, right? And how did you thought ki I'll be building this in particular segment only? So initially, in after graduation, I started working for a startup. Hmm. There, I was a backend developer. I used to be with all the tech guys, and being in a startup, you get a exposure to talk to different teams at multiple times. So Hmm. there, one of our clients wanted to try influencer marketing. Right. So I happened to see it up close how they were doing the entire campaign, like, finding, making the list of the influencers, reaching out to them, tracking Hmm. them, follow-ups, screenshots, everything. So I was like, we are living in the 21st century where we Hmm. are using technology to make the life easier in every aspect. So why not use the technology in this aspect as well? So I started doing the research and took this idea to my then founder, Arvind. He Hmm. loved the idea. So we both did a little bit of our research and started Starbuzz.ai. That's it. Great. And obviously, it's a very competitive market, right? A lot of players are doing that. We when we started, जब इसका थोड़े बहुत लोग करते थे, right? Now everyone is doing that. Even a small digital marketing company has added this in their portfolio. So how do you see that? Like starting this in a very crowded market and making it a like different product, right? So वहाँ पे आप कैसे differentiate करते हो? If you could tell something about that. So actually, it's a good sign and it's a good thing that many people are coming into influencer marketing. And like you said, many digital marketing agencies are also offering influencer marketing because Hmm. that shows key brands are interested in to, include influencer marketing in their strategy. Having Right. said that, what we do is we offer a tool to Hmm. these agencies or brands or digital marketing agencies that they can use. Hmm. So ideally speaking, we are their collaborators. We help them do the work easier with Hmm. less manpower rather Hmm. than calling them our competitors. Hmm. So Absolutely. just like hamare, there's these tools where you can just use to automate the process. There's HubSpot, there's Spotify, where Hmm. you just work on a subscription basis. It's very Right. similar to that, where they just take the subscription of the tool and use it for the time they're executing the campaign, be it a digital marketing agency, influencer marketing agency, or a brand ka in-house marketing team. Hmm. Even digital marketing company can use that for their automation, right? Exactly. Yes. Okay, cool. So what I have observed in this category की जो भी brands होते हैं, right? So there are more middlemen in that कि Yeah. influencer से connect Exactly. करना है and there will be few person जो उनको connect करा के and they are doing the deal. They are Hmm. basically doing the deal. So वहाँ पे companies का जो mindset होता है usually they see कि I have this sort of budget and I want an influencer in XYZ category और मुझे इनसे वीडियो बनवानी है या फिर पोस्ट करवाना है. So they Hmm. don't want मच इंटरफेरेंस कि उनको टेक चाहिए यहाँ पे इतनी इन्वॉल्वमेंट चाहिए दे वांट अ सिंपल सॉल्यूशन एंड वहाँ पे व्हाट इज देयर माइंडसेट इफ यू आर प्रोवाइडिंग देम लेट्स सपोज एन इंडिविजुअल और अ कंपनी क्योंकि दे डोंट वांट टू फोकस ऑन ऑल दिस स्टफ दे डोंट वांट टू मैनेज दिस स्टफ तो वहाँ पे व्हाट आर देयर माइंडसेट एंड चेंज दैट यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरीज. Yeah, I get it. It's actually an interesting question. And also,
There was a phase where, like you said, when all the brands wanted was, for the influencer to create some content and generate buzz. That Hmm. was in the very initial stages of experimenting with the influencer marketing. Hmm. Now all the brands have understood that influencer marketing will work, provided you do with the right influences. Right. So they're not in the experimental stage anymore. Their mindset has also shifted towards, getting results from influencer marketing. Hmm. Just like how in initial stages of social media marketing, initial 2 3 years were went into just experimenting if this works or not. And once Hmm. it works, they started expecting the results. The same thing is happening here as well. We are seeing the transition where there are more brands and more agencies that are giving targets to the influencers. Like, I'll pay you 10,000 if you guarantee me 100K views, or if Hmm. you guarantee me X number of leads, right? Hmm. So Hmm. they are associating these with the accountability. So that mind shift has happened, and Starbuzz.ai it's only enabling it, to make it all the more easier for these brands. See, the main challenge here is, finding the right influencer. Obviously, all said and done, everybody wants to find that right influencer who has the followers, who are Hmm. their target audience. Hmm. See, for some brand, some regional brand, a regional influencer with 5K followers would be their ideal follower, ideal influencer. Hmm. And for somebody, an influencer with 100K would be an ideal influencer. That Hmm. influencer won't work for this brand. So it's very different and it's very hyper focused. So brands are looking for it, brands want to do that. So all we are trying to do is make their decisions more data driven using technology. दैट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली अब जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो विद द प्लेटफॉर्म यू हैव द टेक्नोलॉजी यू हैव तो जैसे आपने बोला कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऑब्वियसली इज नीडेड फॉर एवरीवन राइट सो सभी इस पे फोकस कर रहे हैं एवरीवन नीड्स दैट वो तो एक जेन्युइन सी चीजें हैं बट व्हेन आई हैव सीन कंपनीज और एजेंसीज जो ये काम करती हैं बट आई व्हेन आई सी द रेट्स so that is too high अगर एक छोटी हाँ, कंपनी है they want to go with the influencer so it's very difficult for them to pursue that right तो उन लोगों के लिए what are the solutions और क्या लगता है कि obviously I have seen जब even as an हम्म, individual मैं जाता हूँ किसी एजेंसी के पास so they ask for the budget first कि minimum budget you have right if I say कि I have this budget of 1 lakh rupees per month तो वो बोलते हैं कि दिस इज वेरी लेस वेरी वेरी लेस तो ऑब्वियसली फॉर ए हम्म, स्मॉल जिन्होंने अभी स्टार्ट किया 50,000 1 लाख 2 लाख इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट टू स्पेंड इन मार्केटिंग तो वहां राइट। पे व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दैट इन कंपनीज के लिए हाँ, आई गेट इट। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वेयर देयर इज गुड देयर इज आल्सो बैड। एंड जैसे कि द ब्रांड्स आर लर्निंग एंड दे आर पुटिंग इन एफर्ट्स टू लर्न इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड ऑल, इक्वली यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को भी ये पता चलना है और ये नॉलेज मिलना है कि इतनी एंगेजमेंट रेट में इतनी फॉलोअर्स के लिए आपको दिस इज द बजट ब्रैकेट दैट यू कैन कोट फॉर अ ब्रांड। ये नॉलेज गैप मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने उसको खुद पता नहीं है कि उसको कितना चार्ज करना चाहिए। दे ऑब्वियसली फोमो में या फिर सब लोग करते, मैं भी कर देती हूँ इसमें आके दे टेंड टू चार्ज अ लिटिल मोर। एंड देन राइट बाद में दे टॉक टू मी, दे से कि प्रिया यार, मुझे मुझे तो ब्रांड डील्स ही नहीं आ रही है, मेरे तो एंगेजमेंट रेट सब कुछ अच्छा है, तो क्यों हो रहा है? देन व्हेन वी फाइनली सिट एंड अंडरस्टैंड, इट्स जस्ट दैट दे आर चार्जिंग 2x ऑफ 3x व्हाट दे शुड आइडियली बी चार्जिंग। दे वर लाइक मुझे तो ये पता ही नहीं था। सो देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज गैप ऑन द इन्फ्लुएंसर साइड एज वेल। और इसका एक और लेवल होता है, द मिडलमैन दैट यू मेंशन्ड। इफ if a brand is directly dealing with an agency, there is only the agency का execution fee. But influencer marketing इंडिया में तो इतना evolve नहीं हुआ जितना फॉरेन में हुआ है, क्योंकि there is a lot of middlemen, there is a lot of freelancers in influencer marketing. राइट एक बंदा के पास अगर 1000 या 1000 भी नहीं, 1000 छोड़ो, 100 इन्फ्लुएंसर्स का कॉन्टैक्ट है, तो वो खुद खुद को एजेंसी बोल देता है। राइट Then he'll have his own charges and all these things. So this is also contributing to the price increase वाला factor. So इसके लिए ना Starbuzz.ai में एक और फीचर भी है जहाँ पे हम इन्फ्लुएंसर को ये भी बताते हैं कि ब्रांड और इन्फ्लुएंसर दोनों को उसकी एंगेजमेंट रेट और उसके फॉलोअर्स और उसकी ऑडियंस ज्योग्राफी एंड द कंटेंट कैटेगरी, इन सब चीजों को देख के वी गिव देम कि यू कैन चार्ज समवेयर अराउंड एक्स टू वाई फॉर अ कोलैबोरेशन। सो दैट ब्रांड को भी नेगोशिएशन में पता चल जाता है कि इसको मैक्सिमम इतना दे सकते हो, और इन्फ्लुएंसर को भी पता चल जाता है दिस इज माय ब्रैकेट, मैं इसमें दे सकती हूँ टू गेट मोर ब्रांड डील्स। सो राइट ग्रेट एंड
जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात होती है, फॉर अ ब्रांड टू चूज अ राइट इन्फ्लुएंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके अलावा फॉर इन्फ्लुएंसर टू चूज अ राइट ब्रांड इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? राइट। उन्हें खुद नहीं पता होता है। फॉर एग्जांपल अ क्रिएटर दैट इज वेरी बिग, तो उनको दे हैव टू पोर्ट्रे देयर इमेज, दे हैव टू सेलेक्ट कि एक्चुअली उनके साथ किन के साथ उनको काम करना चाहिए। सो दैट इज आल्सो वेरी चैलेंजिंग फॉर इन्फ्लुएंसर्स, राइट? तो वहाँ पे राइट। व्हाट आर की जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाउ कैन दे सेलेक्ट द बेस्ट ब्रांड फॉर देम, और कैसे फिगर आउट करने चाहिए कि दिस इज अ ब्रांड, इनके साथ हमें काम करना चाहिए व्हेन हम्म। इट कम्स मनी आल्सो और अदर डेवलपमेंट इन देयर पर्सनल कैरियर और ऑल। राइट, राइट, राइट। दैट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो हम इन्फ्लुएंसर्स को ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको पता करने की वो शौक है। Who राइट, wants to learn more, who क्यूरियस, wants दे आर to, क्यूरियस कि हाँ आई शुड वर्क विद हाँ, दिस। क्यूरियस है, हाँ। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसको मैं सब जानती हूँ, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मुझे पता है, तो दो तरह के लोग हैं, जैसे कि सब में होते हैं। तो वी हैव एन ऐप फॉर दिस इन्फ्लुएंसर। हम्म जो लोग अपने खुद की टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी को अप्रोच नहीं कर सकते, और जो जिन लोगों को पता भी नहीं कि देयर इज अ टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी दैट कैन हेल्प यू विथ ऑल दीज थिंग्स। हम्म So we have an app for them, which is हम्म like an which is like their in pocket talent manager, हम्म। है ना? तो they can ask any question to that app, like मेरे अच्छा। सपोज एज अ सस्टेनेबिलिटी इन्फ्लुएंसर, और उसके पास एक होम डेकोर वाली ब्रांड आके बोल गई कि मुझे आपसे करवाना है कोलैबोरेशन। So they can say कि this is my profile and this is the type that brand that has approached me. Should I हम्म go ahead? So the AI, or the app will tell them ki maybe you have to go ahead, or it will analyze the influencer, analyze their audiences, and tell ki आपके ऑडियंस में 50% के ज्यादा लोग आर इंटरेस्टेड इन सस्टेनेबिलिटी, 40% लोग आर इंटरेस्टेड इन होम डेकोर। तो हम्म मे बी यू कैन टेक दिस गैम्बल, मे बी यू हम्म कैन डू द कोलैबोरेशन, बट चार्ज अ लिटिल लेस, बिकॉज हम्म ब्रांड को उतना कन्वर्जन नहीं आएगा आपके साथ कोलैबोरेशन करने में। तो हम्म दैट इज वन थिंग दैट विल हेल्प इन। सेकेंड इज, ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स को ये पता नहीं होता है कि उसका खुद के प्रोफाइल का एनालिसिस कैसे करना है, हम्म। खुद का एंगेजमेंट रेट कैसे पता करना है, यू नो राइट। व्हाट इज द बेस्ट डेज दे हैव टू पोस्ट, व्हाट इज द बेस्ट टाइमिंग दे हैव टू पोस्ट, हम्म यू नो ये छोटे छोटे चीज बहुत छोटे लगते हैं, बट these are very crucial, very important in the growth in the initial stages. तो हम्म हाइपर पर्सनलाइज सजेशंस भी मिलते हैं इन्फ्लुएंसर्स को बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल, हम्म। कि अगर आप आपके प्रोफाइल के एनालिसिस में यू शुड बी पोस्टिंग ऑन ट्यूसडेज, वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज ऑन मे राइट। बी 7 to 8 p.m., क्योंकि दैट इज व्हेन योर ऑडियंस एंगेजमेंट इज मोर। सो ऑल दिस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिप्स, छोटे छोटे ट्रिक्स मिलते हैं उसको। Absolutely, that's important क्योंकि what I have observed, and even as an individual or a page in particular niche, if you start, तो एज ए इंडिविजुअल आपका ये गोल होता है कि आई नीड टू रीच आउट, आई नीड टू गेट 10,000 फॉलोअर्स और 1 लाख फॉलोअर्स, वहां से फिर आई स्टार्ट गेटिंग डील्स, राइट? तो उनका हम्म। एंड यही होता है। सो दैट हम्म। नॉट टू मेक वैल्यूएबल कंटेंट और अच्छा कंटेंट बनाओ, सो दैट मोर एंड मोर ऑडियंस वुड कम टू यू और अच्छी डील मिले, क्योंकि आपको पता है फाइनेंस में यू गेट मोर मनी, हम्म। पर्टिकुलर बिजनेस नीड्स में, स्टार्टर नीड्स में यू गेट मोर मनी, राइट? फैशन में थोड़ा कम है, बट फॉर स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स, राइट, हम्म। क्योंकि पार्टर एंड ऑल भी चलता है। तो वहां पे आई बिलीव कि देयर शुड बी अ सिस्टम जहाँ पे उनको, rather than, obviously it's very important कि उनको अच्छे ब्रांड से कनेक्ट कराना, सजेस्ट करना, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर देम टू गाइड देम टू हाउ टू ग्रो, कि कैसे कंटेंट आपको बनाने चाहिए। जैसे आपने बोला कि यू हैव दिस हम्म। वेयर यू सजेस्ट कि किस टाइम पे पोस्ट करना चाहिए, सजेस्ट देम कि हाउ यू कैन मूव मेक मोर वैल्यूएबल कंटेंट सो दैट और लोग आपके पास आए और डील्स आए और आप और पैसे बनाओ। हाँ, बिकॉज सब ये क्रिएटर्स को भी ये समझना चाहिए कि इट्स अ साइकिल। ब्रांड्स आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके पास ऑडियंस है, आपके पास एक कम्युनिटी है जिसको हम्म आप क्लोजली बॉन्डेड हो। हम्म अगर आप वो एंगेजमेंट और वो क्लोजनेस नहीं मैनेज कर पा रहे हो, देन यू माइट लूज ऑन द ब्रांड कोलैबोरेशंस, इवन इफ योर फॉलोअर्स आर इंक्रीजिंग। हम्म। सो इवन इफ यू रीच दैट 100K 1 million का गोल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ क्लोज रिलेशनशिप विथ योर ऑडियंस, विथ योर कम्युनिटी। ये ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। मतलब राइट। उसका टारगेट होता है 100K पहुंचना, 100K आ गया, हाँ मैं तो बन गई क्रिएटर। They'll have this typical attitude. एंड यू शुड बी मोर लाइक इंटरेक्टिव विद ऑडियंस, उनसे आप इंटरेक्ट करो, बात करो, क्योंकि ऑडियंस लाइक दैट। क्योंकि अगर इफ देयर इज समवन क्रिएटर हो जिसको आप एडमायर करते हो, दे आर रिप्लाइंग टू यू, टॉकिंग टू यू, तो Hmm. एज इंडिविजुअल विल बी मोर हैप्पी कि चलो इसने रिप्लाई कर दिया, इसी Exactly.
he like my story, sees my Hmm. class now, blah blah, whatever stuff it is. तो वो Hmm. उनके beneficial है कि if you're interacting more with the audience, your people, so that will ultimately help you. तो वो एक चीज Exactly. डेफिनेटली. और हाउ शुड बी डिसाइड द प्राइसिंग फॉर इंडिविजुअल क्रिएटर, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग मैथ बना के रखा है कि Hmm. मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ फॉलोअर्स बाय द पॉइंट टू एंड लाइक दैट. तो व्हाट डू यू थिंक कि 10,000 पे पर्टिकुलर नीश में, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंस, तो Hmm. अपनी प्राइसिंग खुद कैसे डिसाइड करनी चाहिए फॉर ए स्मॉल क्रिएटर हु इज मैनेजिंग एवरीथिंग अलोन, इफ दे आर नॉट साइंड बाय एनी एजेंसी और समथिंग? Hmm. So ideally, this will depend upon the brand that is coming. If he's a finance creator और उसके पास फाइनेंस का ब्रांड ही आ रहा है तो ही कैन चार्ज मोर क्योंकि उसका ज्यादा के ऑडियंस 90% का ऑडियंस विल बी इंटरेस्टेड इन फाइनेंस. दैट इज द हम्म. रीजन दे आर फॉलोइंग हिम. हम्म. So maybe he can charge somewhere around 5 to 8,000 हम्म. and हाँ. depending on the engagement rate. That's more important, right? हाँ. So I've seen people getting more money even like we guys. So abhi doesn't matter on the number of followers. So engagement should It's be good. obviously the engagement rate. This is मैंने जो बोल दिया तो it's like for a basic minimum of engagement rate. If Hmm. उसका engagement rate 20% या 50% से ज्यादा हो, he can obviously charge 2 or 3x. Hmm. Hmm. So brand को obviously end में क्या चाहिए? It's not your followers. It's not the number of followers that a Hmm. creator has. It's how many conversions you can get, how many eyeballs I can get through you. Hmm. इन दोनों का ही मतलब है ब्रांड को. मतलब वो लोग आप पे बेट कर रहे हैं कि उसका कंटेंट उसके रिलेटिव टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाए आपके Hmm. थ्रू. सो Hmm. उसको इन दोनों चीज से मतलब है कितनी व्यूज, कितनी कन्वर्जन्स, Right. कितना इंटरैक्शंस हो रहा है इन चीजों से. It's all also depend on the product that you are trying to pitch to people. एग्जैक्टली. If ticket size ज़्यादा है तो obviously if only two people are coming, so definitely the conversion rate or the amount that the brand will be हाँ, getting will be very on बिल्कुल. the. एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द रिस्कीनेस ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर एंडोर्सिंग. Hmm. बिकॉज आपने फाइनेंस इन्फ्लुएंसर का एग्जांपल लिया है तो मैं बोल रही हूँ कि Hmm. फाइनेंस में रिस्क ज्यादा होता है टू एंडोर्स. Right. हाँ, वी हैव रिसेंटली सीन. तो Lot of controversies. हाँ, तो वो तो होता है. तो दे Absolutely. जनरली टेंड टू चार्ज अ लिटिल मोर, लिटिल हाई इन फाइनेंस. Hmm. So at the end of the day, you as an individual will decide कि आपको खुद जज करना है कि what is best for you, for your audience, for your image, right? क्योंकि वो फिर आपको आगे पोर्ट्रे करनी है, आगे उसको कैरी अवे करनी है, क्योंकि as a person, as an influencer, if someone is following you, so they admire you, like maybe you, your content or whatever you are doing, right? तो वहाँ एग्जैक्टली. पे and there should be no miscommunication with the people following you, क्योंकि एक trust is हाँ, nothing. एंड ऑब्वियसली. Yeah, please, please. एंड सॉरी. एंड ऑब्वियसली द फॉलोअर्स भी, फॉलोअर्स आर ऑल्सो इंटेलिजेंट. उसको भी पता है कि क्रिएटर्स को कमाना पड़ेगा. दे डू द ब्रांड डील्स, दे Right. अर्न आउट ऑफ ब्रांड डील्स. ये ऑडियंस को भी पता है. इट्स जस्ट Hmm. दैट क्रिएटर हैज टू बी ट्रू. दे हैव, ऐसे नहीं कि कोई भी ब्रांड मेरे पास आ जाए, आई प्रमोट देम. इट्स जस्ट Hmm. दैट इफ दैट ब्रांड मेक्स सेंस, if my Hmm. majority of the followers will be interested in the brand, pick and choose those type of brands. And I've seen creators, क्योंकि as a creator, if you're getting good deals, good brands, so as a loyal follower, as an individual, लोग खुद खुश होते हैं कि let's हाँ, anyone from the I example know. कि got this Amazon Prime deal, he got this Hotstar deal, for example, Hmm. he is doing everything. So he got stand up in like London, this Albert Hall, Hmm. right? So people celebrate your success कि ठीक है, my creator is getting all this fame and success he is getting. So वो Exactly. चीज़ आपको long term में लेके चलनी पड़ेगी. मतलब obviously these guys are your family and all that. So Hmm. amazing. Exactly. So uh, tell me something about the Starbuzz journey. अभी जब से start हुई, how's everything going? अभी आगे carry forward. What are your plans for that expansion में and stuff? स्टारबक्स का जर्नी अभी तक तो ठीक ही है. इट्स बीन 2 years. इस जनवरी तो आ गए. इट्स विल बी 3 years सिंस वी स्टार्टेड. तो Hmm. अभी तक वी हैव वर्कड विद क्लोज टू 400 brands. SaaS में द सॉफ्टवेयर हैज क्लोज टू 500 clients till now, Hmm. and it's going good. We have worked with big names like Yamaha Music, Alan Soli, Sony Sports, and South maybe Sri Chaitanya. We have worked with good brands, Bajaj Electronics, and
हाँ, द आगे आगे का प्लान जो भी आपने पूछा, तो दैट इज फॉर द इन्फ्लुएंसर थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, द पॉकेट हम्म का टैलेंट मैनेजर ऐप. हम्म So हम्म that will be launched in February. हम्म So agla big news is for the what that is happening in Starbuzz is for the creators, the app launch, and then हाँ उसके बाद तो आगे का फीचर्स बहुत सारा फीचर्स है, एंड देन वी वांट टू टेक इट ग्लोबल. अभी तक तो पैन इंडिया है. All the clients that I told was pan India clients. हम्म So we are looking to take it global in this year. right. So everyone knows कि it's a very roller coaster journey right now. Everyone has been talking about it. तो काफी challenging तो होता ही है, and obviously you are building a tech company. That's very inspiring also as a female. Like I've seen very less people, although it's a very biased question, but I've seen people building in this tech product, right? So वो जर्नी कैसी रही है एज ए इंडिविजुअल, क्योंकि जब आप स्टार्टअप शुरू करते हो, इस जर्नी में जाते हो, तो यू चेंज ऑल्सो राइट. एज ए इंडिविजुअल आप में काफी सारी चीजें चेंजेस होती है. एज अ पेशेंस आप में ज्यादा आ जाता है. व्हाट आई हैव हाँ, ऑब्जर्व, बहुत सारी चीजें. absolutely. तो व्हाट हैज चेंज फॉर यू एज ए इंडिविजुअल व्हाइल बिल्डिंग दिस? There's a lot of changes that happen. पहले तो first thing was I respect time more now. हम्म पहले तो 5-10 मिनट I used to you casually say कि I'll be there in 5 minutes, I'll be there in 10 minutes. Now हम्म I understand the value of those 5 minutes, the difference that those 10 minutes can make. right. Now my thought process is like 5 मिनट में मैं ये मीटिंग कर सकती हूँ, 5 मिनट में ये प्रपोजल बना सकती हूँ, 5 मिनट में ये क्लाइंट के से कॉल कर सकती हूँ. यू नो हम्म द फाइव हम्म मिनट्स का वैल्यू, टाइम का इम्पोर्टेंस मुझे बहुत पता चला स्टार्टअप के बाद. एंड देन लाइक यू सेड, पेशेंस. हम्म Obviously, patience. I am actually a very patient person. Startup में तो मेरे patient का और भी test कर रहा है. So that is second thing. And third is, पहले तो I was a very organized as in everything goes by the book, by the plan. अगर हम्म मैंने एक प्लान बना दिया, जनवरी में ये होगा, फरवरी में सेकेंड वीक में ये होगा, I try to stick to that plan हम्म because I was like this since I was a kid. पर स्टार्टअप में आके मुझे ये पता चला कि nothing goes according to the plan. वी शुड बी वेरी डायनामिक. फेब्रुवरी में आपने कुछ सोच लिया, पर कुछ चेंजेस हो सकता है, कुछ डिलेस हो सकता है, कुछ नया फीचर आ सकता है. इट्स हम्म वेरी डायनामिक. तो आई हैव लर्न टू बी डायनामिक नाउ. And obviously, yeah, I became more strong. I able to say no more that's to the important. things. So yeah, there's been lot of changes in me हम्म personally. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीम बिल्डिंग. क्योंकि आई गॉट लॉट ऑफ क्वेरीज की अच्छी टीम कैसे बनाए, एंड इवन फॉर को फाउंडर्स ऑल्सो, क्योंकि आई हैव दिस ऑडियंस. Most of these people are like starting up, so they are budding entrepreneurs. Obviously there are a lot of start founders also. So this is the major pain point for every company, because that Absolutely. build is the company you build. So how have you built the right team, and how to retain, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंपनीज के लिए. क्योंकि मनी तो Hmm. एवरी, पैसा तो मिल जाता है, कि व्हाट एल्स यू कैन गिव टू दिस पीपल, कल्चर हो गया, या वो एक चीज इन्वायरमेंट होती है राइट. तो Hmm. कैसे Hmm. उसको, एंड व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर पीपल इन योर कंपनी? हाँ, तो फाइंडिंग द को फाउंडर इज अ चैलेंज, बट आई एम लकी इन दैट एस्पेक्ट. मुझे आई स्टार्टेड विद अ को फाउंडर. अरविंद एंड आई वी वर टुगेदर सिंस द बिगिनिंग. पर टीम का बहुत चैलेंज था. वी फाउंड अ टीम मेंबर आफ्टर 20 months ऑफ स्टार्टिंग द कंपनी. ओके. देयर वर वी वर ट्राइंग टू हायर समबडी. बहुत कोशिश कर रहे थे. वी वर asking for referrals, we were going to colleges, we were putting in job portals, but I think everybody can relate to it when I say that startup is like your baby. तो ना, जब आप किसी एम्प्लॉय या फिर केयर टेकर को लाते हो ना, यू वांट द वेरी बेस्ट फॉर योर बेबी. यू वांट टू मेक श्योर कि वो लोग भी इस बेबी को आपकी तरह ही ट्रीट करे. दैट केयरफुल, दैट प्रेशियस. सो it takes a lot of effort. So initially, like I said, it took us 20 months to find the one perfect employee. And then uske baad, every 3 months or every 2 months, we could add few people. And now we are at 16 people ka team. ओके. So, since it's a very small team, अभी तो हमें ये policies वो सब नहीं है. But then the thing that keeps everyone going is the bigger vision. तो हम
we make sure to give our team the bigger vision, क्योंकि फाउंडर्स को विजन होता है, फाउंडर्स का एंड गोल पता होता है, या फिर द फीचर्स वी नो इट, बट हमें somewhere in the way we forget that we have to let our employees also know. क्योंकि what I feel is employees, the team members that join a startup are also equally important and equally risk takers, because they Hmm. are not joining an MNC and they're choosing a startup. They are betting on you as founder to come and work for you. तो Right. इट इज द फाउंडर का रेस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको दिखाना है कि एंड गोल ये होता है, वी आर Hmm. वर्किंग टुवर्ड्स दिस। Hmm. अगर हम सब मिलके ये प्रोडक्ट बनाएंगे और ये प्रोडक्ट इन इतनी लोग यूज करेंगे तो ये होगा, तो Hmm. वी मेक श्योर टू गिव देम दैट विजन, एंड Hmm. इट्स अ वेरी फ्रेंडली मैनेजमेंट स्टाइल दैट वी हैव। we keep we keep joking, we keep partying, and they are touch wood, they are very Hmm. डेडिकेटेड बंच। जब Hmm. काम हो तो वो 10, 11, 12 बजे तक काम करते हैं, एंड they're very good at it. Great. And It's all like we value the people who have that attitude, क्योंकि स्किल्स तुम सिखा सकते हो किसी को भी, right. Right. पर ये एटीट्यूड होना जरूरी है। सो वी Hmm. पिक एंड चूज पीपल हु आर द रिस्क टेकर्स, हु हैव दिस पेशेंट एटीट्यूड, क्योंकि स्टार्टअप्स में इनिशियल एम्प्लॉयज के साथ यू डू अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर्स। उनको वो पेशेंट होना चाहिए, देयर इज नो सेट रूट कि हम ऐसे ही करेंगे, विल बी Hmm. ट्राइंग मल्टीपल वेज एट वंस। So they Right. should have that patience, they should be dedicated, they should have that optimism along with you. So we find people who have these traits rather than skills initially. Hmm. Amazing. And you are so lucky to have these people in your team. So definitely it's very We important part. tried very hard. We tried very hard. Definitely. That's the extra benefit that everyone, not everyone has. So, and now obviously that's why you're trying to build that, right? Everyone comes to us and this is a basic common question. I need a person who can do sales, who can do marketing or stuff like that. So, and thank you so much for your effort Thank in you. speaking in Hindi. So Thank you. तो अभी लास्ट में वी हैव केप्ट अ रैपिड फायर, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, आपको जल्दी जल्दी बस आंसर करने हैं एंड देन विल बाइंड अप दिस राइट। एंड Hmm. इट वाज ग्रेट ऑब्वियसली टॉकिंग टू यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन? Definitely morning person. एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट गिग और कितना पैसा मिला था आपको उसके लिए? It was an internship in a startup. 8,000 मिले थे. ओके। सो एज अ लीडर, सो व्हाट इज योर एडवाइस टू योर लास्ट बॉस? Okay. So I have one very good advice. मतलब what I learned from him. हम्म। Learned not to do from him. So business में ऐसा हो जाता है कि you want the product to be perfect before you release into the public. राइट। But वो product, you have to understand that product कभी भी perfect नहीं होता है. There's हम्म। always features, there's always changes, there's always edits. So हम्म। basic minimum viable product करना है, लोगों तक जाना है. You have to keep taking the feedback. You have to keep listening to the harsh truths and then हम्म। improvise it, and then product becomes better along the way. Never wait for the perfect product. योर बॉस विल डेफिनेटली सी दिस वीडियो आफ्टर। So, who is your favorite entrepreneur अभी करंट में या पास्ट में, like you want to spend a day with और कुछ सीखना है आपको उनसे? दो लोग हैं. Elon हम्म। Musk, obviously. I love the way he thinks. I love the way his brain works. मतलब, he हम्म। has so much confidence in himself that he, that man can do anything. So, Definitely. and and Falguni Nayar. Alien Musk. Yeah, हम्म। yeah, and Falguni Nayar. I admire her. Matlab, at that age, doing a comfortable bank job, leaving everything, trusting in yourself, and like start karna. It's not an easy thing. And being a female founder, and putting your startup at that level where it's a successful IPO thing, it's very commendable. हम्म। And everyone talks about books, like for from every entrepreneur. So I want to ask you कि what is your favorite movie है जो आप recommend करते हो हमारे audience को, जो देखनी चाहिए? Pursuit of Happiness. Okay, yeah, that's an amazing movie. That's a very good, amazing movie. I love that movie. Yeah, Everybody if you're should. ever demotivated in your life, you should definitely watch that movie. So I've Yeah, yeah, multiple times, so that's an amazing movie. yeah. Uh, Absolutely. that was, and it was lovely talking to you, to be honest. And you, uh,
you were great, like obviously what you are trying to build. So definitely after this video, more and more people will get to know what Starbuzz, and you as an entrepreneur, you are an amazing person, and I'd love to meet you again for the next phase of growth, and definitely, Sure. and all the Definitely. Thank you, Aman. It's a very nice initiative that you're doing. Thank you for having me here. thank you so much. Take care. Thank Bye. you. Bye.